Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Dear students, we were discussing about some major ecosystems, chapter number 26, and I have discussed with you forest ecosystem, desert ecosystem, and today I am discussing with you grassland ecosystem. How can we define grassland? The grasslands are areas where the vegetation is dominated by grasses and other herbaceous plants. Herbaceous plants means small-sized plants having non-woody or soft stems. The location of grassland ecosystem in Pakistan is Gilgit, Kashmir, Waziristan, Lower Chitral, and North Kalat. Worldwide, grassland ecosystem is distributed in center of Eurasian continents. Prairies. Grasslands present in temperate climate are called as prairies, such as prairies of North America, pampas of Argentina. These grasslands don't have woody trees, while savanna are grassland present in tropical climate and called as savanna. Such savanna, for example, savannas of Australia, North America, and Africa. And savannas have woody trees. Students, this is important short question from board exams that differentiate between prairies and savanna. Prairies students basically क्या होती हैं? ये वो ग्रासलैंड्स हैं कि जो टेम्परेट क्लाइमेट की हैं. मतलब टेम्परेट क्लाइमेट से शो हो रहा होगा कि जो प्रेरीज होंगी, इन प्रेरीज का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत कोल्डर होगा और इनमें इनका जो बेसिकली जो ग्रोइंग सीजन होगा वो शॉर्ट टाइम के लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर जो वार्म टेम्परेचर होगा वो बहुत कम टाइम पीरियड के लिए होगा. तो इसीलिए ज़्यादातर अरसा जो है वो ठंड रहेगी. बहुत थोड़े टाइम पीरियड के लिए गर्मी का सीज़न आएगा, यानी थोड़ा सा टेम्परेचर लो डाउन होगा और उसी टाइम पीरियड में प्लांट के पास अबंडेंट मॉइस्चर होगा, जिसकी वजह से उसको उसी टाइम पीरियड में ग्रो करना होगा. जिसकी वजह से जो प्रेरीज हैं, इन प्रेरीज का कोल्डर टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ की जो ग्रासेस हैं, इनमें एक तो वुडी ट्रीज नहीं होते हैं, दूसरा यहाँ की जो ग्रासेस होंगी उन ग्रासेस का जो ग्रोइंग सीजन होगा वो उनको शॉर्ट टाइम मिलेगा ग्रो करने के लिए. और सवाना में क्या होगा कि सवानास में, क्योंकि ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट के, तो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होगा कि वहाँ का टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम नहीं होगा जैसे टेम्परेट का है. इनका कोल्डर नहीं होना, इनका टेम्परेचर और इनको मॉइस्चर जो होगा वो फ्रीली अवेलेबल होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रासेस भी ग्रो करेंगी और उसके अलावा यहाँ पर वुडी ट्रीज भी ग्रो करेंगे. तो इन यहाँ पर ग्रो करने वाली ग्रासेस को, प्लांट्स को ग्रोइंग सीजन जो होगा वो इनको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा ग्रो करने के लिए. इसीलिए सवाना जो होते हैं ये जैसे साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में है, इनमें साथ साथ वुडी ट्रीज भी ग्रो हो जाते हैं. यू कैन सी ओवर हियर दिस grassland is prairies and it is savanna. It is showing some woody trees over here, while prairie is not allowing the growth of woody trees. Rainfall. The grassland usually face severe droughts. Is basically the climate of the grasslands. Grasslands mostly face severe drought stress. It means shortage of the water. Annual rainfall is about 250 to 750 millimeter, which is about 10 to 30 inches. Annual rainfall is 10 to 30 inches. In tropical and subtropical grasslands, the rainfall reaches 1500 millimeter. It means 60 inches. स्टूडेंट्स ये दो तरह का रेनफॉल आपने याद कर लेना है कि ओवरऑल इनका एनुअल रेनफॉल क्या होता है 10 टू 30 इंचेस है, लेकिन जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा एंड इट विल रीचेस अबाउट 10 to 60 इंचेस. Thus grassland occurs in regions where mean annual rainfall is midway between a forest and a desert. This is important point that you should know. The grassland, the rainfall of grassland is in between forest and the desert. It means it is more than desert and lower than forest. In general, they have a continuous cover of the grass and which virtually no trees all except along the rivers. Generally, there are no trees
but savannas having trees. Water and fire are crucial factors in the competition between grasses and trees. ये important point है, ये आपने याद कर लेना है MCQ point of view से कि water और fire, these two are important factors in competition between grasses and trees. यहाँ की जो grasses और trees का जो competition होगा उनमें ये पानी और fire जो होगा ये उनका main competition होगा grasses और trees की growth में. Dominant plant life. Dominant plant species are graminoids. ग्रेमिनोइड स्टूडेंट्स बोलते हैं जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, जो ग्रासेस लाइक होते हैं, उनको ग्रेमिनोइड्स बोलते हैं, जिनमें हमारे बहुत सारे जैसे ये ग्रैम्स जो भी हैं ये भी अपने शॉर्ट साइज की वजह से ये ग्रासेस नहीं आते हैं, जितने भी हम ग्रैम्स जो जिनको हम यूज भी करते हैं. फॉर एग्जांपल ग्रासेस एंड ग्रास लाइक प्लांट्स, सर्टेन फॉब्स. फॉब्स भी हर्ब्स को बोलते हैं जो लीफी हर्ब्स होती हैं, स्पेशली सच एज compositae, legumes, and many other herbaceous plant species are also associated with grasses. Layering. Layering is an important characteristic of grassland ecosystem. The grassland ecosystem, in grassland ecosystem, numerous grasses grows, and according to their length, they make three type of layers. The first layer is made up of tall grasses, for example, andropogon and panicum. Here is an andropogon. It is a tall grass, you can see over here. And the second layer is made up of mid-high grasses that are shorter than tall grasses. For example, stipa, sporobolus, or isopsis. For example, over here, it is a stipa, and stipa is having length shorter than tall grass such as andropogon or panicum. And the third layer is of short grasses, forbs, and warfare species such as poa, bromus, mosses, and lichens. The third layer is made up of very short sized grass. ये जो ग्रास होगी ये जमीन से थोड़ी सी ही ऊपर को हल्की सी ऊपर ही उठी हुई होगी, बल्कि देखने में ऐसी लगती है कि बिल्कुल जमीन के साथ साथ है. लेकिन जो मिड हाई ग्रासेस होंगी वो शॉर्ट ग्रासेस से थोड़ी सी बड़ी होंगी, ऊपर की तरफ उठी होंगी, और टॉल ग्रासेस जो होंगी वो इन तीनों से टॉलर होंगी, जिसकी वजह से हमें थ्री लेयर्स नजर आएंगी. फर्स्ट लेयर इज ऑफ टॉल ग्रासेस, सेकंड लेयर इज ऑफ मिड हाई ग्रासेस, एंड थर्ड लेयर इज ऑफ शॉर्ट ग्रासेस. स्टूडेंट्स, इनके जो डोमिनेंट स्पीशीज हैं ग्रासेस में जो प्लांट्स की, उनको अपने याद रख लेना है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है. What are the soil conditions of grassland ecosystem? The soil moisture is limited on account of low precipitation and high evaporation. ग्रासलैंड इकोसिस्टम में मेन रीजन क्या होती है यहाँ पर ड्राउट स्ट्रेस आने की? वो ये होती है कि यहाँ पे इनकी जो सॉइल होती है वो एक स्पेसिफिक टाइप की सॉइल होती है. ये सॉइल की दो लेयर्स होती हैं. अपर लेयर जो होती है उसमें कुछ पोर्स होते हैं, लेकिन डीपर लेयर जो होती है वो काफी कम्पैक्ट होती है, जिसकी वजह से जो सॉइल का मॉइस्चर होता है वो अपर लेयर में होता है, डीपर लेयर में नहीं होता. और अपर लेयर का जितना भी मॉइस्चर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, जिसकी वजह, और यहाँ पर प्रेसिपिटेशन रेट जो है वो फॉरेस्ट की निस्बत वैसे भी लो होता है. तो लो प्रेसिपिटेशन रेट और हायर इवेपोरेशन की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर ड्राउट स्ट्रेस आ जाती है. अपर सॉइल लेयर इन विच ग्रासेस आर रूटेड इज नॉर्मली मॉइस्ट. जहाँ तक ग्रासेस ग्रो करती हैं, अब क्योंकि ग्रासेस जो होंगी वो ग्रो करेंगी वो अपर लेयर तक ही उनकी रूट्स पहुंचेंगी. So, and the upper layer is mostly moist, but the deeper layers are constantly dry. The soil of the grassland is basically impermeable with excessive salinity. Excessive salinity is basically salt stress. यहाँ पर salts बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो grassland जिसकी जो soil होती है वहाँ पर salt concentration greater होती है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये saline soil है. तो इनकी सॉइल के बारे में आपने याद रखना है कि सॉइल अपर लेयर इज इन विच ग्रासेस आर रूटेड इज नॉर्मली मॉइस्ट, एंड डीपर लेयर इज ड्राई, and the soil of grassland is basically saline soil. Animal life, dominant species are herbivores. Invertebrates including insects are very numerous. For example, grasshoppers become so numerous that they can compete with other herbivores for plant foliage. Plant foliage means leaf.
The leaf coverage of the plant is called as foliage. Overall leaves, collectively leaves are termed as foliage. So herbivores normally depend upon plant foliage, and the second animal life includes predators such as reptiles, amphibians, mammals. For example, lizards, toads, and turtles prey on insects. Foxes and wolves among the mammals are very common among decomposers. Many bacteria, actinomycetes, and fungi like molds, yeast, mushrooms, bracket fungi are most common. Large animals like zebra, wild horses, bisons are important. स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे डोमिनेंट एनिमल्स याद रखने हैं हर्बीवोर्स, कंज्यूमर्स जिनमें सारे प्रीडेटर्स आ जाएंगे, जिनमें रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, ये सारे हैं. हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स होंगे, तो आप लिखेंगे इनमें प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं. प्रोड्यूसर्स में सारे प्लांट्स होंगे, ग्रासेस होंगी. फिर कंज्यूमर्स में हर्बीवोर्स हैं, प्रीडेटर्स हैं, और डिकम्पोजर जो है उनमें बैक्टीरिया और फंजाई की डिफरेंट टाइप्स हैं. प्रोड्यूसर्स फॉर एग्जांपल डिफरेंट ग्रास स्पीशीज. कंज्यूमर्स में बहुत सारे एनिमल्स जो होंगे वो सारे आ जाएंगे, जिनमें हर्बीवोर्स भी होंगे, कार्निवोर्स भी होंगे, वो सारे होंगे. एंड डीकम्पोजर्स, जैसे यहाँ पर ये फंजाई ग्रो कर दिखा रहे हैं, तो डीकम्पोजर्स भी ग्रासलैंड इकोसिस्टम है. तीनों तरह की जो एनिमल लाइफ है वो यहाँ पर एग्जिस्ट करती है. प्रोडक्टिविटी इन टेम्परेट ग्रासलैंड. स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको बताया कि प्रेरीज और सवाना होती है. प्रेरीज टेम्परेट है और सवाना ट्रॉपिकल है. दोनों का इन्वायरमेंट काफ़ी डिफरेंट है, तो इसी सेंस में इनका जो रेनफॉल है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो डिफरेंट होती है. तो टेम्परेट ग्रासलैंड्स, द रेट ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन इज अबाउट 700 to 1500 ग्राम पर मीटर एनुअली. एनुअली क्या होता है? 700 से 1500 ग्राम पर मीटर स्क्वायर यहाँ का जो प्राइमरी प्रोडक्शन रेट है, कितनी यहाँ पर ओवरऑल जो ग्रासेस जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं. और इन सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आर सब ह्यूमिड एंड टेम्परेट आर somehow dry, and tropical subhumid grassland, the productivity is about 4000 gram per meter square. In annual grasslands, the large grazing animals consumes relatively small amounts, such as 5 to 10% of the total herbage produced. Invertebrates, rodents, and birds may consume an equal amount or little more. यानी जितनी भी प्रोडक्टिविटी है, तो जनरली एनुअली जो ग्रेजर्स हैं, जो बेसिकली ग्रासेस को खाने वाले हैं, वो 5 to 10% इन यहाँ की जो ग्रासेस हैं इन को वो खा जाते हैं. Human impact. The natural grasslands in the world are used for crop production and livestock management. Only a small fraction of the world's grassland has been in cultivation due to acid climate conditions. इनकी जो क्लाइमेट है यहाँ का वो एसिड क्लाइमेट होता है, जिसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं किया जाता. With soil erosion and salinity. Salinity is basically excess of salts, and erosion means removal of top layer of soil, which is fertile layer of the soil due to flooding or air. एरोजन कहते हैं कि सॉइल की जो अपर लेयर है उसका मूव कर जाना, उसका वहां से हट जाना, हवा से, पानी से, किसी भी और इफेक्ट की वजह से. और सॉइल की टॉप लेयर ही फर्टाइल सॉइल होती है, ये बात याद रखनी है. उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, वही सॉइल नरम होती है, उसमें पोर्स होते हैं, उसमें ग्रासेस ग्रो कर जाती होती हैं, उसमें प्लांट्स ग्रो करते होते हैं. अगर टॉपर लेयर सॉइल की इरोड हो जाए, मतलब वहां से रिमूव हो जाए, तो बाकी जो सॉइल रह जाती है वो रॉक की तरह होती है, वो कम्पैक्ट होती है और उसमें प्लांट्स ग्रो नहीं करते. तो अगर इरोजन जो हो जाती है, इरोजन से एक जो पॉपुलेटेड एरिया है वो बैरन एरिया में कन्वर्ट हो जाता है. तो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन एसिडिक है, सॉइल एरोजन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, सैलिनिटी होती है सॉइल में, जिसकी वजह से ह्यूमन इम्पैक्ट जो है वो कल्टीवेशन की सेंस में नहीं है. ग्रेजिंग एंड हैज़ प्रोमिनेंट इफेक्ट ऑन ग्रास, लेकिन ग्रेजिंग का इफेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ग्रासेस है जो ग्रो की हुई होती है, उसकी वजह से जो ग्रेजिंग है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है. ओवर ग्रेजिंग का इम्पैक्ट, ओवर ग्रेजिंग काजिंग रिडक्शन इन हर्बेज कवर and results in soil erosion.
ओवरग्रेजिंग की वजह से सॉइल एरोजन होती है क्योंकि ग्रासेस को ग्रेजर्स खा जाएंगे। अब तो उससे क्या होगा, टोटल जो हर्बिज कवर है वो कम हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ग्रासेस ज्यादा जितने ज्यादा ग्रेजर जो है वो ओवर ग्रेजिंग करेंगे, उससे ग्रासेस रिमूव हो जाएंगी, वो रूट्स समेत उनको उखाड़ लेते हैं समटाइम्स, जिससे अब जो बाकी जो सॉइल है वो सॉइल इजीली इरोड हो जाएगी। Many lands are converted into deserts by the process called desertification due to overgrazing. This is the impact of overgrazing. This is a short question, that what is the impact of overgrazing? And what is human impact on grassland ecosystems? So you can write that overgrazing is converting the grassland ecosystem into deserts. So students, ये हमारा आज का लेक्चर था, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है।